ये वियोन की वीडियो है। ग्रेविटास इंडिया टू रीथिंक सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ जिन लोगों को नहीं पता, ये गद्दारी के संदर्भ में है कि एक गद्दार को क्या सजा मिले, तो उसके लिए सेडिशन लॉ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि ये सेडिशन लॉ बहुत मिसयूज हो रहा है इसके बारे में फ्री स्पीच के संदर्भ में भी इसका प्रयोग किया जाता है कि किसी की स्पीच दबानी हो, उसके लिए ये आरोप लग रहे हैं। ऐसे मेरा स्पीच के बारे में क्या मानना है, फ्री स्पीच के बारे में, सबसे पहले तुम्हें वही बता देता हूँ। मैं डिब्बे में मानता हूँ कि एक बड़ा डिब्बा बना हुआ है, उस डिब्बे के भीतर तुम्हें कुछ भी कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, एब्सोल्यूट रूप में। तुम रिलीजनों को भी गाली दो, मुझे परवाह नहीं, गंदी से गंदी गाली दो किसी के देवता को, भगवान को, मुझे परवाह नहीं। क्योंकि मेरा मानना है कि फ्री स्पीच से वास्तविक में हमारी सभ्यता शक्तिशाली होती है। सोच के देखो, पिछले कुछ समय से जब से ज़्यादा लोग अपनी फ्री स्पीच का प्रयोग करने लगे हैं, ज़्यादा खुल के हर विषय के बारे में बात करने लगे हैं, उस समय से भारतीय सभ्यता अधिक शक्तिशाली होने लगी है। जबकि अटैक पहले भी होते थे लेकिन हम उत्तर नहीं दे पाते थे, अब खुल के देने लगे हैं। तो उस संदर्भ में सोच के देखो कि हमारी सभ्यता शक्तिशाली होती है जितनी अधिक फ्री स्पीच होती है। वो डिब्बे वाला मैंने नियम बताया ना, डिब्बे के भीतर तुम्हें खूब स्वतंत्रता है कि तुम जिसको चाहो उसको गाली दो, जिसकी चाहो उसकी आलोचना करो, पर कभी भी डिब्बे को हाथ नहीं लगाना है, डिब्बे को नहीं तोड़ना है। वो उसका अर्थ क्या है, कभी भी भारत के विरुद्ध कुछ नहीं करना। बाउंड्री बना दी गई ना भैया, सीधी सरल है कि देश के विरुद्ध कुछ नहीं करना, देश के विरुद्ध कुछ नहीं कहना, नारे नहीं लगाने कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, या बंदूक के दम पे लेंगे आज़ादी, उस प्रकार के नारे। भारत के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना है भाई, सीधी सरल बात है। एकमात्र नियम है ये। यदि तुम उस फ्री स्पीच का प्रयोग करके हिंसा की बात कर रहे हो, दंगे भड़काना चाहते हो, हिंसा की तुम बात कर रहे हो ना डायरेक्टली, तो तुम्हें तुरंत जेल हो जानी चाहिए। या भारत के विरुद्ध कुछ भी प्लानिंग कर रहे हो या टेक्निकलिटी से बचना भी चाहते हो, तो भी सरकार तुम्हें बिल्कुल टारगेट करे और तुम्हें जेल में डाल देना चाहिए। मेरे तो सीधे सरल विचार है। उस डिब्बे के भीतर तुम कुछ भी करो, किसी की भी आलोचना करो, प्रधानमंत्री की भी आलोचना करो, प्रधानमंत्री को गाली भी दो, उसकी भी छूट होनी चाहिए मेरे अनुसार। पर उस डिब्बे को तोड़ने की कभी भी तुम्हें छूट नहीं है। मुझे लगता है कई जगह पे शायद ये मिसयूज भी हुआ होगा। अधिक चीज़ें मुझे ये वीडियो देखने के बाद पता चलेंगी। बहुत सारे विचार हैं इस संदर्भ में मेरे, मुझे पता नहीं मैं सारे दूंगा या नहीं, मुझे जो चीज़ें ध्यान में आती है मैं कहता जाऊंगा। ठीक है, वीडियो देखते हैं अभी ये। Now they say change is the only constant. The only way to remain relevant is to constantly change with the times. And this is not a prologue to a lecture on philosophy. What I'm talking about, or what I'm going to talk about next, is law. It's about how laws must change with the times to remain relevant and effective. And I've said this before in the context of gun. और एक और चीज़ मुझे याद आई, एक और न्यूज़ वगैरह, मुझे पता नहीं, अब मैं गलत कोट नहीं करना चाहता, पर ऐसा कुछ लिखा हुआ था शायद कि इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना जहाँ पे आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट देना या उस प्रकार की चीज़ें देना, उनके लिए भी लोग जेल में नहीं जाते हैं। टेक्निकलिटी पे वो बच जाते हैं। आतंकवादी संगठनों का खुल के सपोर्ट करने पे भी उन पे इस प्रकार के कानून क्यों नहीं लागू होते, सेडिशन वगैरह के। तो अभी कानूनों में बहुत सारे बदलावों की आवश्यकता है। तो मैं खुला हुआ हूँ इन विचारों के लिए कि बहुत सारे बदलावों की अभी आवश्यकता है। Laws in the US, how human rights in America are being compromised because the country has refused to change an age-old law. Tonight I bring you a positive story, and this one's from India. India is trying to change an age-old law to protect human rights and the freedom of nearly 1.4 billion people. The government of India is rethinking the sedition law. The Narendra Modi-led government has told India's apex court that it will be re-examining the sedition law in India. First things first, what is the sedition law? This law states that a person commits the act of sedition if he or she brings or attempts to bring hatred, contempt, or disaffection towards the government. Now this law is vaguely worded and it's widely abused. यही मेन समस्या है। जो गवर्नमेंट्स वगैरह है उनको कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो उन लोगों को जेल में डालते हैं इस प्रकार के कानूनों का दुरुपयोग करके। अब जो ये कह रहे हैं ना कि इसको बिल्कुल हटा दिया जाए, वो भी बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि अभी जैसे ही ये खबर आई है ना, उसके साथ ही एक और खबर भी आई है कि जेल में एक बंद है जिसने वास्तविक में देश के विरुद्ध काम किया है। उसने भी अप्लाई कर दिया कि अब ये चीज़ हटने वाली है, तो मुझे भी अब बेल मिलनी चाहिए। ऐसा कुछ तो कानूनी कार्रवाई वहाँ पे चलेगी अभी आगे। इसका लाभ भी उठाएंगे देशद्रोही जो वास्तविक में देश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, देश के विरुद्ध बोल रहे हैं। तो इसको हटाना नहीं चाहिए बिल्कुल। इसमें बदलाव की आवश्यकता है, वो तो हटा देना चाहिए हिस्सा कि गवर्नमेंट के विरुद्ध तुम बोलो कुछ भी, तुम्हें जेल हो जाए, वो तो होनी ही नहीं चाहिए। पर जो भारत के विरुद्ध बोले, भारत के विरुद्ध कुछ भी प्रोपेगेंडा करें या भारत के विरुद्ध हिंसा करने की बात करें, उसको तो जेल होनी चाहिए भाई। And we'll get to that in a bit. First, let's look at the origins of this law. Sedition dates back to the British Raj in India. The law was drafted by British historian and politician Thomas Babington Macaulay. The name may ring a bell. Macaulay is the same man who pushed to make English the medium of instruction in the Indian education system. He was an imperialist, if there ever was one. And he defined sedition in these words: whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation or otherwise,
brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India. Like we said, the words are vague because the idea was to abuse it as much as possible to suppress dissent. Why? To tame anti-imperialism in India. The sedition law came into effect in 1870. In the years that followed, the British used sedition to crack down on India's freedom movement and India's freedom fighters. Mahatma Gandhi was accused of sedition. So was Lokmanya Tilak. In fact, anyone who raised a voice against the British imperialists was tried for sedition in India. But somehow, even after 75 years of independence, sedition remains an ugly truth of modern India. If accused of sedition, you don't get bail. You could go to jail for life. Even if you manage to get out in some years, you'll be barred from applying for a government job or, for that matter, traveling abroad. In 2020, 73 cases of sedition were filed in India, 93 in 2019, at least 70 in 2018. And all of these cases, there were just 2 convictions, which only goes on to show the disutility of this law. And I'm not saying that sedition cannot be used to combat secessionism or terrorism. It can. But the fact is that in most cases, police fail to file a charge sheet because most sedition cases are baseless. You see, in a country of nearly 1.4 billion Indians, where there are 1.4 billion versions of the truth, any of these truths can seem seditious to someone. So what happens next? In 2018, the Law Commission of India highlighted this problem in its report. Singing from the same songbook is not a benchmark of patriotism. One must indulge in constructive criticism or debates. Expressions used in such thoughts might be harsh and unpleasant to some, but that does not render the actions to be branded sedition. There is no doubt that sedition is antithetical to freedom of speech and expression. In fact, India has been fighting this law for quite some time. In 2011, a private member's bill against sedition was introduced in the Rajya Sabha, the upper house of parliament. In 2015, a private member's bill was introduced in the Lok Sabha, the lower house of parliament. In 2021, the Apex Court of India stepped in. The Chief Justice questioned whether sedition was necessary even after 75 years of independence. Well, today the government has an answer. The affidavit filed with the Supreme Court reads, and I quote, "The Honourable Prime Minister believes that at a time when our nation is marking Azadi Ka Mahotsav, we need to, as a nation, work even harder to shed colonial baggage that has passed its utility, which includes outdated colonial laws and practices." And then it goes on to say, "The Government of India, being fully cognizant of various views being expressed on the subject of sedition, and also having considered the concerns of civil liberties and human rights while committed." ठीक है, तो ये थी वीडियो। मैं आशा कर रहा था बहुत सारी और चीज़ें भी जानने को मिलेंगी। मेरे बिल्कुल स्पष्ट विचार है जो मैंने तुम्हें बता दिया कि गवर्नमेंट को आलोचना करनी, गवर्नमेंट को गाली देने की, यहाँ तक कि CM PM को गाली देने की तुम्हें पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए इस संदर्भ में कि तुम उनके विरुद्ध ये बात नहीं कर रहे कि मैं इसकी हत्या कर दूंगा या इसके विरुद्ध मैं ये योजना बनाऊंगा इसको हानि पहुँचाने के लिए, या फिर तुम देश के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हो। जब तक तुम ये सब कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है कुछ भी कहने की, समझ रहे हो। बाकी दूसरे कानूनों की हम बात नहीं कर रहा कि हैरेसमेंट वगैरह और वो सब भी आते हैं, पर मैं यहाँ पे फ्री स्पीच की बात कर रहा हूँ। खुल के तुम्हें हर विषय के बारे में बोलने की छूट होनी चाहिए। मेरे बिल्कुल स्पष्ट विचार है इस बारे में। एब्सोल्यूट फ्रीडम होना चाहिए इस संदर्भ में। डिब्बे वाला नियम जो मैंने तुम्हें बताया कि डिब्बे की दीवार को नहीं छूना है, डिब्बे के भीतर तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है।